Namaskar viewers, good evening. You are watching Sansad TV with me, Rajiv Kumar Singh, and this is the House Highlights, where we bring you the summary of the proceedings of both the Houses of Parliament. Before we begin with the details of today's Parliament session, a look at the headlines. Vice presidential election tomorrow, NDA candidate Jagdeep Dhankar to face opposition candidate Margaret Alva, counting of votes after voting concludes. No privileges for MPs in criminal matters, clarifies Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu. Both houses discuss private members' bills. Lok Sabha discusses the Energy Conservation Amendment Bill 2022 after Union Power Minister R.K. Singh moves it for consideration and passing. Two other bills introduced. Now the news in detail. Election for the new Vice President of India will be held on Saturday. Voting will be held in Parliament House from 10 a.m. to 5 p.m. All preparations for the voting have been completed. Jagdeep Dhankar is the BJP-led NDA's vice presidential candidate, while the opposition parties have fielded Margaret Alva. Polling will be held in room number 63 on the first floor of Parliament House. Just as in the presidential election, no political party can issue a whip for voting in the vice presidential election. Votes will be counted the same day and the result will be declared soon after. News now from the upper house of the Parliament. Protests by opposition parties, including Congress, on issues like price rise and action of investigating agencies forced adjournment of both the Houses of Parliament on Friday. After the Rajya Sabha met for the day, opposition leaders began protesting an adjournment till 11:30 a.m. However, when the House met again, similar scenes were repeated and the Rajya Sabha was adjourned till 2:30 p.m. Chairman M. Venkaiah Naidu said that some members of the House had an incorrect notion that MPs are exempt from detainment, arrest and questioning while the House is in session. He further said that MPs are on the same footing as the common man and that the privilege endowed by the House does not excuse them from responding to criminal proceedings. In the observation, I said no member of the House should avoid appearing before any investigating agency when she or he is called upon to do so by citing reasons of the House duty, as the law makes it our abundant duty to respect the law and legal procedure. It applies to all in cases because you can only perform in the House is in session, seeking further date, but you cannot avoid the enforcement agencies for the law enforcing agencies summon or notices. This has to be taken note by one and all. In a landmark case, Supreme Court of India, K. Anandam Nambihar, and another Supreme Court had held that the true constitutional provision is that, so far as valid order of detention is concerned, no member of parliament can claim no special status or higher than that of an ordinary citizen, and is as such liable to be arrested, detained or questioned during even this session. Deputy Chairman of the Upper House noted that Chairman M. Venkaiah Naidu will be demitting office on August 10th. The House will not conduct a 0 hour on August 8th to enable MPs to bid farewell to Chairman Naidu. Shri M. Venkaiah Naidu ji, Honorable Chairman, Rajya Sabha will be demitting office on 10th of August 2022. The House will be bidding farewell to him on Monday, the 8th of August 2022. Accordingly, there will be no 0 hour or on that day to enable the leaders of parties and others to make a farewell speech. The House took up a discussion on the Right to Health Bill 2021. The private member bill was moved by RJD Manoj Jha last month. The bill aims to provide for health as a fundamental right to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living a life of dignity. Take a look at some key speakers. जब साहब दुनिया में कोविड क्राइसिस चल रही थी, फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन था, सेकंड वेव था और फर्स्ट लॉकडाउन के दरमियान
हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है ना, दुनिया हमारे पर अपेक्षा करके बैठी थी, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, दुनिया हर दिन इंडिया को कॉल करती थी, प्रधानमंत्री जी को कॉल करते थे, हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करते थे। मैं फार्मा देख रहा था और उस वक्त मोदी जी ने हमें निर्देश दिया था कि हमारे देश में मेडिसिन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले लोग हैं। हम केवल लाभ की बात नहीं करते हैं, हम हमारे घर के डोर पर लिखते हैं शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं, हम शुभ की भी बात करते हैं। Incidentally, we passed a bill recently 2 days ago on the ground that we have an international obligation to fall in line with weapons of mass destruction. We have an international obligation also to ensure right to health. Not one. We have a series of obligations put together. So I would submit to the government to treat this as a government-supported bill, and not only that, not just pass a bill, but to also make a plan of action for the next 5 years. भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया है। क्या ये 35 लाख वाले, क्या ये 38 लाख वाले, 57 लाख वाले, 27 लाख वाले अपनी अपनी देश में अपने अपने नागरिकों को राइट टू हेल्थ दे पाए? दिया क्या? देने की मनसा है क्या? देश के कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से आपने कोविड महामारी पेंडेमिक में रात दिन काम करके इस देश को स्वास्थ्य दिलाने का काम किया, स्वस्थ करने का काम किया, और आफ्टर कोविड जिस तरह सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। माननीय मनोज झा जी ने जिस उद्देश्य से इस विधेयक को लाने का काम किया है, मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा, विद्वान व्यक्ति हैं, कि हमारी सरकार के इन कामों पर अगर एक बार उन्होंने गंभीरता से झलक डाली होती तो शायद उनको ये विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती। राइट देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और हमको एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ता है ताकि लोगों को बगैर राइट दिए भी वो सब चीज़ें मिल सके। बहुत सारी जगह दुनिया में देखा गया है जहाँ राइट दे दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उनको उस राइट देने का भी फ़ायदा नहीं मिला। आंकड़े बड़े मिसलीडिंग होते हैं सर। ग्रेजुएशन में समझा था कि आप कहिए कि 48% इस बार था, अगली बार 58 किया, टोटल बजटरी आउटले का क्या प्रोपोर्शन, ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप वो देखें तो चिंताजनक तस्वीरें हैं। केरल की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन केरल को भी, जो कि बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, लेकिन राइट टू हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं सर, जब राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी तो हाउस में इसी तरह की चर्चा हुई थी। क्या जरूरत है ये बिल्डिंग बना देना, कैंपेन चला देना, चलो सब स्कूल की ओर, लेकिन राइट टू एजुकेशन का एक लेजिस्लेटिव फ्रेम देना सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। एक मैं कहना, हमारे अजय जी बोल रहे थे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सचमुच दे आर द कैरियर्स ऑफ हेल्थ सिस्टम। Rajya Sabha took up a private member's legislative business in the second half today. CPI MP Santosh Kumar moved the Reserve Bank of India Amendment Bill 2022 for introduction. The bill aims to further amend the Reserve Bank of India Act 1934. YSRCP MP moved 3 bills for introduction in the upper house today. These include the Constitution Amendment Bill 2022, insertion of new Article 3A, the Representation of the People Amendment Bill 2022, and the Press Council Amendment Bill 2022. AAP MP Raghav Chadha introduced the Minimum Support Price Guarantee Bill 2022. The bill aims to entitle every farmer the right to guaranteed minimum support price for his crops and agricultural produces. And Rajya Sabha extended birthday wishes to RJD MP Manoj Jha, who turned 55 years today. मैं उल्लेख करूं कि यह बिल माननीय मनोज झा जी द्वारा लाया गया है और आज उनका जन्मदिन है, तो मेरी निजी बधाई और सदन की ओर से मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू। Time for a short break here. We will be right back with more session updates.
the story of India's economic journey since independence. We will be exploring this in a two-part series of Economic Sutra only on Sansad TV. See you then. देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी किसी कार्यक्रम का आह्वान करते हैं तो पूरा देश का जनमानस को उसको अभियान के रूप में लेता है। इस बार भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने हर घर तिरंगा फहराने का उन्होंने यह कार्यक्रम देशवासियों को हाथ में दिया है। मुझे मालूम है और मुझे पूरा भरोसा भी है कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पे इतना बड़ा अभियान बनेगा और देश के आन बान शान को आप देखेंगे किस प्रकार से एक ऐसा सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा, वो देखने लायक होगा। Welcome back to House Highlights. And now time for the news from the lower house of the Parliament. Lok Sabha proceedings witnessed several adjournments on Friday following an uproar by the opposition MPs over various issues. As soon as the House met at 11 a.m., Speaker Om Birla made obituary references for former MP Bhim Prasad Dahal, who recently passed away. श्री भीम प्रसाद दहल सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दहल कृषि संबंधी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री भीम प्रसाद दहल का निधन 67 वर्ष की आयु में 5 मार्च 2022 को गंगटोक, सिक्किम में हुआ। हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। Speaker Om Birla also marked the 77th anniversary of the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki in 1945 and paid tributes to those who lost their lives in the two Japanese cities. आज जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना के 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार मानवता को परमाणु बम की भविष्यता से परिचित कराया था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकिरण के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं। आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को विश्व से समाप्त करने तथा पूरे विश्व में शांति, भाईचारा और सद्भाव के भावना के प्रचार प्रसार के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लें। The Lok Sabha on Friday took up discussion on the Energy Conservation Amendment Bill 2022. Union Power Minister R.K. Singh moved the bill for consideration and passing. The bill empowers the central government to specify a carbon credit trading scheme. The amendment was tabled in the lower house on August 3rd. Explaining the salient features of the bill to counter climate change, power and new and renewable energy Minister R.K. Singh stressed that the country needs to go for energy transition and reduce its dependence on imports to meet its energy targets of 2030. COP21 में पेरिस में सभी देशों ने प्लेजेस किए, हम लोगों ने प्लेज किया, हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि वर्ष 2030 तक हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है उसका 40% हम क्लीन सोर्सेज से करें, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, उसको नॉन फॉसिल कहते हैं, जिसमें कि एमिशन नहीं हो। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, बायोमास है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, और एक होता है क्लीन सोर्सेज जैसे कि न्यूक्लियर पावर। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा
विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा। ये लक्ष्य मैडम हम लोगों ने करीब 9 साल पहले ही लक्ष्य के 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। 2021 नवंबर में हम लोगों ने अपने विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से कर लिया। Members cutting across party line took part in the discussion. रूफटॉप सोलर प्रोग्राम हो, उसमें भी हमने 4000 मेगावाट का टारगेट रखा कि 4000 मेगावाट का लक्ष्य पूरा करेंगे। और एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पूरी दुनिया के लिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उस गोल में जो 11 में है, इस रिन्यूएबल एनर्जी से हम 9 इश्यूज को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। तो इससे साफ है कि आज भारत जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में क्रांति कर रहा है, उस नाते आज इस बिल को जिस तरीके से हम अमेंड कर रहे हैं, उसके पीछे यही मंशा है। This current amendment doesn't take cooling demand into consideration. The bill's only talking about large residential buildings. The reality is that we need to have a focus on passive cooling. What is passive cooling? When you're designing a building, you need buildings that utilize shading, that utilize other techniques. And we need to incentivize the use of 5-star energy-saving air conditioners, solar heaters, solar pumps. None of this is coming under the purview of this Act. We have shown rapid adoption of renewable energy sources during the last nearly 1 decade. If we are able to realize the set goals of even 50 to 60%, we will have huge savings in import bills, improving energy security, creating green jobs, attracting huge investments, and above all, we can advance the adoption of clean tech innovations, such as energy storage technologies and green hydrogen production, etc. From every angle, this bill is of immense help to India and to its people, and hence I'm supporting it. Global warming is no longer a theory, it's a reality. We are seeing floods where we don't expect floods. We are seeing the glaciers melt. We are seeing flooding everywhere in all the cities which didn't even expect for heavy rains to be. We have seen heat waves sweeping the country. So this is time for all of us to react. This is the time where we should make amends. Meanwhile, Bharturi Mehtab, who was in the chair, said the deliberation on the bill will continue on the next day. 2 bills were introduced in Lok Sabha on Friday. The Competition Amendment Bill, which seeks structural changes in the governing structure of the Competition Commission of India, was introduced by Minister of State for Corporate Affairs, Rao Inderjeet Singh. On behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Competition Act 2002. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill. The New Delhi International Arbitration Centre Amendment Bill was also introduced in the lower house of Parliament. Law Minister Kiren Rijiju tabled the bill. I wish to move for leave to introduce a bill to amend the New Delhi International Arbitration Centre Act 2019. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Lok Sabha took up the private members' bills on Friday. Under the private members' business, several members introduced bills on the floor of the House. BJP MP Rama Devi introduced the Female Farmers Entitlement Bill 2021. Midhun Reddy introduced Basic Food Items Price Fixation Board Bill 2019. Asaduddin Owaisi introduced a Right to Water Bill 2020. PP Chaudhary introduced a bill further to amend the Constitution of India to insert 2 new articles, 220A and 336.
at serial number 66 in today's list of business. The Lok Sabha also took up for consideration and passing the Compulsory Voting Bill 2019 moved by BJP MP Janardhan Singh Singriwal. Addressing the House on the same, Minister of State for Law and Justice SP Baghel said, if voting is made compulsory, the poor of the country will be the ones suffering the most. वैसे भी हम मौलिक अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात ज़रा कम करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। तो अनिवार्य मतदान अन्य चीज़ों का अतिक्रमण कर सकता है। अनिवार्य मतदान आवश्यक रूप से एक बाध्यकारी वाक है जो वाक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, क्योंकि बोलने के अधिकार में आवश्यक रूप से नहीं बोलने का अधिकार सम्मिलित है। इसलिए उनका ये कहना है कि ये अलोकतांत्रिक होगा, किसी व्यक्ति को मतदान के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि ये उनका कहना है कि ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और मैं और मेरा विभाग भी इस बात से सहमत है कि ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। Addressing the House, Janardhan Singh Singriwal said, if voting is made compulsory, then the resources being spent on voter registration campaigns can be diverted towards welfare of the poor. मैं एक बात मैं मंत्री से मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं से मतदाताओं के विश्वास भी बढ़ते हैं और मतदान केंद्र पर वो जाते भी हैं, तो यह बात सही है। लेकिन यह कहीं से भी मेरी यह भावना नहीं है, मेरे मन में यह कहीं से भी यह ऐसी बातें नहीं है कि जिससे कि गरीबों को उससे कष्ट हो। गरीबों को इससे कल्याण भी होने वाला है। मैं चुनाव आयोग तो कई एक नियम बनाए हैं। चुनाव आयोग तो पहले और आज में जो नियम बनाए हैं, पहले यह अभी मतदान होता था बैलेट से, आज वह मतदान बदला और बैलेट के जगह पर ईवीएम से मतदान हो रहा है। पहले आपको आई कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी, अब आई कार्ड के भी कई एक प्रोसेसेस चुनाव आयोग ने लाने का काम किया है। यह चुनाव आयोग की अपने जिम्मेदारी के तहत, और चुनाव आयोग सबका मतदान कैसे उनके मतदान केंद्रों पर हो सके, यह बात चुनाव आयोग तय करे। Responding to him, SP Singh Baghel said, since the Narendra Modi government has come in place, there has been an increase in voter outcome. Later, MP Janardhan Singh Singriwal withdrew the bill for consideration. जब मैंने बताया कि केवल नरेंद्र मोदी जी की 2014 में प्रधानमंत्री बनने की प्रत्याशा में 8.5% वोट हुआ और इस बार एक बढ़ा है तो 9.5%। 2009 से यूपीए की सरकार से एनडीए की सरकार में 9.5% वोट अचानक बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी और अपने वैश्विक नेता के प्रति लोगों में एक श्रद्धा की भावना होगी, तो उनको दोबारा आने के लिए, उनको रिपीट करने के लिए, अपनी गरीबी के हक और हुकूक को पाने के लिए लोग ज़्यादा मतदान करेंगे। मैं पुनः एक बात कहूँगा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर 80 करोड़ लोग पीडीएस का भोजन करते हैं, 12,000 का शौचालय लेते हैं, 12 रुपये का बीमा करते हैं, ऐसे में अनिवार्य रूप से मतदान जाना मतदान केंद्रों पर ये बहुत समाचीन नहीं होगा। Matters of urgent public importance were raised during 0 hour in Lok Sabha. नोआपड़ा जिला पोस्टल मुख्यालय में अभी तक नया मुख्यालय स्थापित नहीं हुआ है। उक्त सभी पोस्ट ऑफिस पिछले 3 दशक से जिला कालाहांडी पोस्टल मुख्यालय से संचालित किए जा रहे हैं। इसलिए पोस्टल सेवाओं की सुगमता के लिए नोआपड़ा जिला पोस्टल मुख्यालय जिला के मुख्यालय में पोस्टल मुख्यालय खोलने के साथ एक पोस्टल अधीक्षक को भी नियुक्त किया जाए। एक तरफ जहां हम पूरे देश में 75,000 स्टार्टअप्स की उपलब्धि पर गौरवान्वित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में 2021 में स्टार्टअप झारखंड कार्यक्रम के तहत केवल 7-8 नए स्टार्टअप पूंजीकृत हो पाए हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल कदम उठाएं और राज्य सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश जारी करें। चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का हो, ये जो एक्सटेंशंस का जो सिलसिला है, सेवा विस्तार का जो सिलसिला है, इसको अगर ख़त्म ना भी कर सकें तो ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो आने वाले अधिकारी हैं वो हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि शायद प्रदेश में या केंद्र में उनके काम की उतनी अहमियत नहीं जितनी उनसे सीनियर की है।
That's all for today in House Highlights. Keep watching Sansad Television for all the Parliament updates. Thank you. Good night.